हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आदि। तो आज हम देखने वाले हैं HTML लिस्ट्स। लिस्ट्स क्या होते हैं? तो उससे पहले आप मेरे चैनल कोड विद आदि को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल और पाइथन। ये दोनों प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लीजिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे HTML। फिर हम बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। बॉयलर प्लेट मतलब सारे इसके टैग्स मैंने अपने पिछले वीडियो सॉरी पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब हम इसका टाइटल चेंज करेंगे। हम करेंगे इन HTML। ओके ओके। सो लिस्ट्स क्या होती है? लिस्ट्स मतलब अब आप एक लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट मतलब एक लिस्ट में कुछ आइटम्स होते हैं। तो दो तरह की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जो ऑर्डर्ड नहीं है। ओके, अनऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर्ड नहीं है, वो इंडिकेट होती है स्मॉल ब्लैक सर्कल्स के सहायता से। तो मैं आपको बताता हूँ, हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूएल टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही मैं यूएल लिखकर एंटर दबाऊंगा, ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा। फिर मैं और एक बार एंटर दबाकर इसमें लिखूंगा यलाए। यलाए मतलब लिस्ट आइटम। ओके, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और यलाए मतलब लिस्ट आइटम। ओके, सो हम इसमें सपोज डालेंगे कॉफी। कॉफी ओके, और हम जितने चाहे उतने डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे टी, हम इसमें डालेंगे ग्रीन टी। ओके, और मैं अगर इसे सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ, राइट क्लिक कर तो आप देखिए ये ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, ये स्मॉल सर्कल आ रहा है इसके पहले, मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लियर। मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब आइटम्स इंडिकेट होते हैं एक स्मॉल सर्कल की सहायता से। ओके, ये प्रैक्टिकली ही एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ें हैं। हम इसे ओरली या थियोरेटिकली नहीं समझ पाते, इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो सेकेंड है ऑर्डर्ड लिस्ट। सो जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूएल टाइप करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टाइप करेंगे ओएल। ओके, ओएल टाइप करने के बाद सेम प्रोसेस एल आई, इसमें डालेंगे सेम आइटम्स। ओके, अगर मैं सेव करूँ और देखिए 1 2 और 3, तो अब ऑर्डर्ड लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टाइप होता है, मतलब अगर आपको ये जो 1 2 3 आ रहा है, तो आपको ये 1 2 3 नहीं चाहिए, तो आप टाइप कर सकते हैं टाइप। ये देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड हमें ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इस टाइप के कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ओके, तो अगर मैं ए करूँ, मतलब कैपिटल ए करूँ, तो ये देखिए ABC हो गया। समझ रहे हो? तो अगर मैं अन्डू करूँ और फिर से टाइप करूँ टाइप, तो ये देखिए स्मॉल ए आ गया। तो स्मॉल ए मतलब स्मॉल ABCD सेम। ओके, और दूसरा हम देखते हैं, वो है आई। ओके, आई मतलब रोमन। ओके, रोमन में मतलब कुछ सेव, हाँ सेव नहीं होगा।
तो ये देखिए, 1 2 3 मतलब I AA, रोमन न्यूमरल्स। कुछ तो गड़बड़ रही है, ये एरर दिखा रहा है। इस टेबल का क्यों दिखा रहा है? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। Now it is okay. I forgot to use the equals to sign. As you can see now, it is in small case. Okay, okay. Now ordered list हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप हो गया। इसमें भी टाइप होता है। ओके, okay, let us see on the internet. Type HTML. Okay. तो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये मतलब VS कोड यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये ऑटोमेटिकली हमें सजेशंस देगा ही। और अगर कुछ समझ में ना आए तो गूगल देवता बैठे ही हैं। ओके, गूगल पे आप पूरी पूरा HTML का इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। ओके, सो एक W3 स्कूल्स की W3 स्कूल्स की वेबसाइट खुली है। उसमें देखिए, आपको बता रहे हैं कि CSS की सहायता से हमें सिर्फ HTML के सहायता से चाहिए। सो HTML.com एक वेबसाइट है। सो URL टाइप इज इक्वल्स टू, एक होता है सर्कल डिस्क। ओके, वेट सेकेंड। disk disk we have this don't have the type attribute. Uh, we have to use our CSS for this. Okay, this HR, sorry, HTML port is not working. So I have restarted the port. Wait a second, let me check. Now, yes, now it is working. And if I now, yes, as you can see, square bullets are now see, we can see the square bullets. So there is another one, disk one. So disk means this, and circle means there is another one, circle. Circle means uh, round shape without any background. Okay, so as you can, as we now saw, as we saw, what we saw now is the unordered list and its type, ordered lists and its type. So there is one more type of list, which is definition list. Okay, so I will show you.
definition list in HTML. So W3 schools, DL tag. So definition list means it is a very simple means description list or definition list. Okay, description list, description list. So its syntax is DL, DT, and DD. Okay, so I will now explain. DL defines description list. DL tag is used in conjunction with DT, define terms and names, and DD describes each term or name. Okay, so I will show you the full form of DD tag in HTML. So DD means the description details element. Okay, description details element. So we will create a DD, sorry, DL, DT, and so as you can see the syntax is DL, DT means element and black hot detail. Okay, so DT means suppose we will use here sugar. Okay, yes, it is only example. BD, and now I will use here not good, not good for health. Okay, so here is our okay. So as you can see, means description means sugar's description is not good for health. Sugar is not good for health is not good for health is description of sugar. Okay, understood? So this was all about lists in HTML. So that was all for today, guys. Thank you guys for watching. Like, share, and subscribe my channel. Thank you guys for watching. Bye.